Guys, today we are study about something more in software project management. Hi, my name is Rajshree Mhatre from CS IT department from St. Wilfred College of Arts, Commerce, Science, Panvel. Let's start with the software quality. Quality software refers to a software which is responsible for reasonable bugs or defect-free is delivered in the time and within the specific budget. Meet the requirements and our expectations, and it's maintainable. Uh, in the software engineering contents, software quality reflects both the functional quality as well as the structural quality. Now, what happens in software quality? If the software is does not have a good quality, अगर सॉफ्टवेयर अच्छा रीजनेबल बग्स नहीं है, डिफेक्ट फ्री है, टाइम से डिलीवर हो गया, स्पेसिफिक बजट में ही बन गया है, जो रिक्वायरमेंट्स या उसके एक्सपेक्टेशंस को मीट करे और मेंटेनेबल भी है, तो हमारे यहाँ मतलब हमारे सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में इसका कंटेंट इसमें दो रिफ्लेक्शन है, एक है रिफ्लेक्ट करते हैं, एक है फंक्शनल क्वालिटी एंड वन इज एज वेल एज स्ट्रक्चर क्वालिटी. सी व्हाट हैपेंस यार, जहाँ पे फंक्शनल क्वालिटी है मतलब वो कैसे फंक्शन कर रहा है, हाउ इट इज वर्किंग, हाउ इट इज व्हाट आर द फ्यूचर इन्हांसमेंट्स अबाउट इट, उसका क्वालिटी क्या है. हम जो हर प्रोडक्ट की वारंटी वगैरह बोलते हैं ना, जो प्रोडक्ट 2 साल की वारंटी, 3 साल की वारंटी, हम जो बोलते हैं, यहाँ पे फंक्शनल क्वालिटी यहाँ पे मैटर करती है कि उसकी वारंटी कितनी, वो कितने तक चलेगा, हाउ इट इज विदाउट बग. मतलब कोई अगर डिवाइस कोई प्रॉपर चल नहीं रहा है तो उसका फंक्शनल कैसे होना चाहिए, हाउ उसकी क्वालिटी कैसी होनी चाहिए कि पर्सन कैन ट्रस्ट हिम. अगर कोई क्वालिटी फंक्शनाइज नहीं है, अगर वो ठीक से काम नहीं कर रहा है, तो इट इज समथिंग लाइक कि उसका बाद में या फ्यूचर में उसका इंटेक बहुत कम हो जाएगा, लोग उसका खरीदना बंद कर देंगे. बग्स नहीं है, डिफेक्ट्स नहीं है, वो सब ठीक है, बट वो काम ही नहीं अच्छे से कर रहा है तो उसका यूज ज्यादा नहीं हो पाएगा. स्ट्रक्चरल क्वालिटी भी बहुत इंपॉर्टेंट, उसका स्ट्रक्चर इम्पोर्टेंट है, वो फ्लेक्सिबल होना चाहिए, रिलायबल होना चाहिए, हर एक बंदा यूज भी कर सके, और इट इज तो थोड़ा सा मतलब बोलते हैं ना, थोड़ा सा एक्सपेंसिव भी नहीं होना चाहिए, उसके एक्सपेक्टेशंस भी ठीक से मैच होने चाहिए. ये टोटल सब कुछ मिलाकर एक अच्छी सॉफ्टवेयर की क्वालिटी बनेगी. नेक्स्ट विल गो विद द सॉफ्टवेयर फंक्शन. सी थोड़ा सा यहाँ पे और एक्सप्लेन किया है. Software functional quality, it reflects how we will satisfy the given design based on the functional requirement and specification. Now, नीचे है software structural quality. It deals with the handling of non-functional requirements that support the delivery of a functional requirements such as robustness or the maintainability and the degree of which the software was produced correctly. फंक्शनली उसका डिजाइन कैसा है, मतलब वो सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं, उसके रिक्वायरमेंट्स स्पेसिफिकेशन पर ही फंक्शनल डिपेंड है. तो स्ट्रक्चर किस पे डिपेंड है, उसका डिग्निटी पे, उसकी डिग्री पे, उसकी डिग्री ऑफ व्हाट सॉफ्टवेयर इज प्रोड्यूस करेक्टली कि नहीं, उसका रोबस्टनेस, उसका मेंटेनेबिलिटी. Next is software quality assurance. See, software quality assurance, that is SQA, is a set of activity to ensure the quality in software engineering processes that ultimately results in quality software product. The activity establishes and evaluates the process and that produce products. It involves process focused action. What happens here? Whatever we are delivering the product, उसका क्वालिटी का एश्योरेंस हम ले रहे हैं कि वो क्वालिटी अच्छे से मेंटेन रहेगी, उसको अच्छे से इवेलुएट हो रहा है हमने. सो इट्स नथिंग बट वो वही मैं बोल रही हूँ, जो डिग्री और जो डिग्री ऑफ हम जो बोलते हैं ना वारंटी दे रहे हैं, तो दिस इज एन अश्योरेंस कि उसकी क्वालिटी कब तक अच्छी रहेगी. क्योंकि आप बाइंग एनी काइंड ऑफ प्रोडक्ट, इलेक्ट्रिक प्रोडक्ट, 2 साल की वारंटी होती है. इट मेक श्योर कि जो भी सॉफ्टवेयर है या जो भी उसका टेक्निकल इश्यूज है वो 2 साल तक पॉपअप ना हो, पॉपअप ना हो, और हो मतलब आफ्टर यूजिंग प्रॉब्लम्स हो रहे हैं, दैट इज डिफरेंट थिंग.
बट 2 साल तक उसमें कोई इश्यूज ना हो, इट शुड बी इन अ प्रॉपर वे, तभी क्वालिटी मेंटेन रहेगी, उसका एश्योरेंस रहेगा. नेक्स्ट इज क्वालिटी कंट्रोल. Software quality control (SQC) is a set of activities that ensures the quality in software product. These activities focus on determining the defects in the actual product produced. It involves product focused action. Now, how product is going to the quality control कैसे करेंगे हम लोग, जो भी सॉफ्टवेयर है उसके अंदर, how it is going to maintain it, how we are going to maintain that software. It will help us to understand the productivity or the product, how it is going to determine how the defects has to be controlled, how the defect has to be controlled. ये सब इसमें आएगा, that is software quality control में. Next is the place of software quality in project planning. See, quality will be the concern at all stages of project. Okay, planning and execution, but we will be a particular interest of the following points in the stepwise framework. See, क्वालिटी, सॉफ्टवेयर की क्वालिटी कहाँ पे मतलब बोलते हैं ना कहाँ पे देखी जाएगी या कहाँ पे उसको प्लान किया जाएगा, उसके बहुत सारे पॉइंट्स है. लेकिन हमारा पहला कंसर्न क्या रहेगा कि पहले हर एक स्टेज में प्रोजेक्ट का प्लानिंग हो और वो उसका एग्जीक्यूशन भी हो. कोई पर्टिकुलर क्या बोलते हैं पर्टिकुलर स्टेज तो है नहीं, बट फिर भी वी विल गो विद सम काइंड ऑफ स्टेप्स. देयर आर सम picture here, you can see some there is we are selecting the project first. See here, we are going to select project first. Okay, then we are going to analyze, identify उसके projects की scopes और objectives क्या है. सबसे पहले requirements भी बोल सकते हैं कि उसके achievements क्या है, उसको project supplier को क्या चाहिए. Next we'll go with the आइडेंटिफाई द प्रोजेक्ट इंफ्रास्ट्रक्चर. अगर प्रोजेक्ट प्लान हो रहा है, उसकी एक्टिविटीज हमें ऑब्जेक्टिव्स पता चल भी गए, स्कोप पता है. नाउ वी आर गोइंग टू फाइंड द आइडेंटिफाई द प्रोजेक्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर, कैसे बनना है. नेक्स्ट, एनालाइज द प्रोजेक्ट कैरेक्टरिस्टिक्स. फोर्थ वन इज आइडेंटिफाई द प्रोडक्टिविटी, or we can say identify the product and activities. Here we can review. Okay, here we can review कि वो बार बार चेक भी हो सके. Next, fifth one is estimating the effort of for activity. यहाँ पे for each activity हमें उसका risk या उसकी planning पता होनी चाहिए. Sixth one is identify the risk. Seventh one is allocate resources. Eighth one is review and publish plan. Ninth one is execute plan, and 10th one is lower value planning or lower level planning. यहाँ पे lower level planning estimate होना चाहिए किससे, हम पे जो efforts लिए हैं, जो amount use की है, जो cost estimate की है उसके बारे में. Even the review what to identify the product's activity. हमें पता होना चाहिए कि वो product कैसे use में होना है, how it is going to behave. First step is identifying the project scope and the objective. Some objectives could relate to the quality of an application to be delivered. जहाँ पे सॉफ्टवेयर या जो भी सॉफ्टवेयर स्कोप है उसके, वो क्वालिटी एप्लीकेशन में डिलीवर होना चाहिए, मतलब हमें पता होना चाहिए कि उसका रिलेटेड क्या है प्रोजेक्ट. Second, identify the project infrastructure. Within this step, activity identifies installation standards and procedures. Some of this will almost certainly be about quality requirements, the place of the software. Third one is analyze the project characteristics. In this activity, application to be implemented will be examined to see if it has any special requirements. Fourth one is identify to the product and activities of the project. It is at the point, the entry, exit, and the procedure requirements identified for the each activities. Now you will say, बीच में के 5, 6, 7 कहाँ चले गए? See, in first activity you will understand that in that picture. See, in this picture you will understand. See, therefore the identifying product is going on. Later than जो एस्टिमेट हो रहा है कॉस्ट, उसका रिस्क एनालाइज क्या हो रहा है, एंड एलोकेशंस, ये एक तरफ रखे जाते हैं और सबसे पहले रिव्यू किया जाता है. आफ्टर कंप्लीटिंग दिस ऑल स्टेप्स, विल गो विद डायरेक्टली 8th one, that is the review. Sorry.
Review and publication plan. All this stage the overall quality aspect of the project that are planned to be reviewed. जो भी बनाया है वो रिव्यू करना है, फिर उसको एग्जीक्यूट करना है, फिर उसको प्लान करना है. The importance of software quality. Increasingly criticality of software, the final customer or the user is naturally anxious, anxious about the general quality of software, intangibility of software. This makes it difficult to know that a particular task in the project has been completed satisfactorily. Accumulating errors during the software development. As computer system developed is made up of number of soft steps where the output from one step is the input to the next step. The error in the earlier deliverable will be added to those in the later step, leading to an accumulating determining the effects. Now, software quality models. There are some software quality models. The best one is Boehm's model. Here in software quality model are the standardized the way of measuring the software product. Boehm model. This model describes how easy and reliably a software product can be used. This model actually elaborates the aspects of McCall model in detail. It begins with the characteristics that resorts to a higher level requirements. In 1978, Boehm's introduced this software quality model. This model represents a hierarchy quality model similar to the McCall quality model to define software quality using a predefined set of attributes and matrices, each of which contributes to overall quality of software. जहाँ पे बोहम्स थे उन्होंने इंट्रोड्यूस किया था ये सॉफ्टवेयर मॉडल को इन 1978 किसके जो सिमिलर था मैककॉल क्वालिटी मॉडल्स की तरफ से. ये क्या प्रीडिफाइन करेगा सेट ऑफ एट्रीब्यूट्स एंड मैट्रिसेस जहाँ पे each contributes a overall quality of the software. The difference between the Boehm's and the McCall model is that McCall's model primarily focuses on precise measurements of high-level characteristics, whereas Boehm quality model is based on the wider range of the characteristics. दोनों में डिफरेंस क्या है? मैककॉल्स मॉडल में क्या किया, जो फोकसेस किया था वो सिर्फ हाई लेवल कैरेक्टरिस्टिक्स पे था, लेकिन बोहम्स की क्वालिटी ने क्या किया था, जो बोहम्स क्वालिटी मॉडल है उसने वाइडर रेंज ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स में डिफरेंस दिखाया. For example, characteristics of hardware performance that are missed in McCall's model. The Boehm's model has the three levels for quality attributes. These three are divided in the basis on their characteristics. These levels are primary, uses high-level characteristics, intermediate construct, middle level characteristics, and primitive construct, primitive characteristics. The higher level of Boehm's model for following three primitives uses state at below as a utility or utility extent out to which we can use software as is maintainability, effort required to defect and fix an error during maintenance, portability, effort required to change software to find or to fit in a new environment. Next one, the next level of Boehm's hierarchy model consists of 7 quality factors associated with 3 primary uses stated as below. The first one is portability. Efforts required to change the software to fit in the new environment. Reliability, content to which software performs according to requirements. Efficiency, amount of hardware resources and code required to execute a function. Usability, extent of efforts required to earn, operate, and understand the functions of a software. Testability, effort required to verify that software performs its intent functions. Understandability, effort required for a user to recognize logical concept and the applicability. Modifiability, effort required to modify a software during the maintenance phases. See, यहाँ पे कुछ लेवल्स है या हायरार्की मॉडल्स है जो 7 क्वालिटी फैक्टर्स एसोसिएट करता है, जहाँ पे 3 प्राइमरी यूजेस होते हैं. फर्स्ट इज पोर्टेबिलिटी, मतलब एक जगह से दूसरी जगह पे लेके जा सकते हैं, मतलब एनवायरनमेंट चेंज होने पर
रिलायबिलिटी अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट वो परफॉर्म कर सके, एफिशिएंसी जो हार्डवेयर रिसोर्सेस है या जो कोड रिक्वायर्ड है वो आराम से मिल जाए, एग्जीक्यूट हो जाए। यूजेबिलिटी मतलब ह्यूमन इंजीनियरिंग हम बोल सकते हैं। एक्सटेंड एफर्ट ऑफ टर्न मतलब लर्न और ऑपरेट हो सके, अंडरस्टूड है उसके फंक्शन, सॉफ्टवेयर पता होना चाहिए, हर बंदे को समझ में आ सके। टेस्टेबिलिटी सॉफ्टवेयर परफॉर्मेंस उसका अच्छा होना चाहिए। अंडरस्टैंडेबिलिटी लॉजिकल कॉन्सेप्ट नहीं होनी चाहिए, अच्छे से एडजस्ट हो जाना चाहिए। मोडाफिलिटी अगर उसको मॉडिफाई कर सके या उसको मेंटेन हो सके तो आराम से होना भी चाहिए। वह फर्दर या आगे हम बोल सकते हैं कि उन्होंने क्या क्लासिफाई किया इन कैरेक्टरिस्टिक्स इनटू प्रिमिटिव कंस्ट्रक्ट आर एज फॉलोज: डिवाइस इंडिपेंडेंस, एक्यूरेसी, कंप्लीटनेस, कंसिस्टेंसी, डिवाइस एफिशिएंसी, एक्सेसिबिलिटी, कम्युनिकेटिवनेस, सेल्फ डिस्क्रिप्टिवनेस, legibility, structuredness, consciousness, ability. For example, testability is broken down into accessibility, communicativeness, structuredness, and self-descriptiveness. ISO model, हम उसको ISO 1926 models भी बोलते हैं. It's a software. It is an international standard software quality model that helps in creating a solid framework for assessing the software. This standard way of assessing software can be segregated in 4 different ways. This can be used in the address subject of different nature. See, there are some compliance है उसके of ISO 1926 के. First is testability and stability, जो maintainability से बोलते हैं ना, maintainability से introduced है. Efficiency से क्या introduce हो रहा है? Resources usability and time behavior. Portability से adaptability, replaceability, installability and coexistence. Reliability से maturity, fault tolerance and recoverability. Functionality से regularity, accuracy and security. Sustainability और interoperability. Usability से learnability, understandability, activeness, operativeness. Maintainability से एक और है गया था analyzability और changeability. There are some, ये सब चीजें ISO 9126 से introduced है, जहाँ पे ये मॉडल यूज किया जाता है. ISO जैसे हमने पहले बोहम्स मॉडल बोल रहे हैं, जैसे क्वालिटी मॉडल से, जैसे ISO 9126 भी क्वालिटी मॉडल है और इसके कुछ फीचर्स है और इसी फीचर्स के हिसाब से ये चलता है. Okay, next. Thank you. We will see next topics in our next lecture.